Hello everyone. Welcome to your channel Sapish English Classes. I hope you all are good and doing well, studying well because your examinations are approaching near and it's time for you guys to start working hard. Just gear up yourselves and get ready to write your examinations. So I wish you all the very best in advance, so that you can just have that inspiration and that feeling that your examination is actually about to approach near, so you can start studying hard. And this time is such a time when we need to cooperate with each other. We as teachers and you as students, both of us need to be with each other, cooperate with each other, and try our best to coordinate with each other, because the time is not favorable for us, and this is a time when we have to prove that we can do everything for the sake of education, and that what happens, no matter what happens, education will not get hindered. So on this positive note, let us start today's lecture, and what I've picked up today is one story. I know that that particular scene in The Tempest is still left to be done, some parts of that scene, but I'll do that in other video lectures. For this particular video lecture, I've picked up this story, The Story of an Hour, which has been written by Kate Chopin. And this story is actually based on the patriarchal pattern of the society. It is going to portray a patriarchal pattern of the society to you. Now, what is patriarchal pattern? Actually, it refers to a male-dominating society. Now it's time for us to understand कि क्या है ये story और male dominating society क्या होता है. First of all, let me tell you that this story is so much relevant with reality that you will be able to learn a lesson not only for your examination purpose but also a lesson for life. You will get to learn something which is realistic and which is relevant with the world that we live in. So we need to understand first of all what is patriarchy. Patriarchy is actually it refers to such a particular pattern which is followed in the society and wherein the male counterparts are given more significance and more preference, and that they are regarded as the leaders of the family, and that their decisions should be the final ones, and women are suppressed by the male counterparts, they are dominated by the male counterparts. So such a society is called a male dominating society, or you can say a society which is patriarchal. Patriarchy is there, patriarchy is followed there. So such a pattern of the society where patriarchy is followed has been portrayed through this particular story, The Story of an Hour. However, this story is quite small and it is going to take place within an hour. Whatever happens, एक घंटे में सब हो जाएगा. But you will get a very deep message from this story. So how it is based on this patriarchal pattern and how this patriarchy is going to affect and everything we are going to learn. So let us start this story, and this story in this particular lecture we are just going to do a summary of this story. So there is a character of Mrs. Millard, and Mrs. Millard is actually wife of Brentley Millard. Brentley Millard's wife. And इनके फ्रेंड है मिस्टर रिचर्ड्स, और मिसेस मिलार्ड जो है इनकी सिस्टर है जोसेफाइन. So now we have to see what happens. Now this major character Mrs. Millard, जो कि Brentley Millard की wife है, she is actually suffering from some kind of a disease which causes trouble to her heart. That means she is suffering from some kind of a heart disease, as a result of which her heart has become quite sensitive, and that the doctors have advised that she should not be given any shocking news, in a shocking manner.
For example, she should neither be given any extreme good news or extreme bad news all of a sudden. So, what is prohibited is that she should not be given any news all of a sudden or abruptly or suddenly, but it should be revealed to her very slowly and gradually. So, this happens that Mr. Richards जो है, he is on he's at the railway station, and there he gets to know that an accident has taken place, and in that accident he finds out that so many people have been killed, and in that list of the people who have been killed there is a name of his friend as well, and that name is leading the list. That name is the name of Brentley Millard. So, as soon as Mr. Richards finds out that his friend has died as well in the accident that took place at the site, so he rushes to the house of Brentley Millard so as to reveal this shocking news to his wife all by himself, because he could not trust anyone else with this shocking news, as he was aware of the fact that the doctors had told that Mrs. Millard should not be given any extreme good news or bad news in such a shocking way, and that she should be revealed, extreme kind of a news or a shocking news, I can say, in a very, gradual or slow manner. So, what happens here that Mr. Richards took this responsibility on his own shoulders and went all the way to the house of Brentley Millard, and there, when he reached the house and entered the house, he found that Mrs. Millard was there and her sister Josephine. So very slowly and gradually he disclosed the news of her husband's death, and obviously that was like a shock to her, but in general, what is expected from a young wife to behave like or to react like when she gets to know of the death of her husband is that she gets silent, or she is completely in shock and does not speak anything and does not cry either. But here what happened, that as soon as the news was revealed to Mrs. Millard, she couldn't control herself and she began to weep atrociously, very badly, and she fell in the arms of her sister Josephine, and she just cried out, cried very loudly, badly, atrociously, and after she had cried quite a lot, she just got from there and went upstairs to her room. She went upstairs and locked herself in a room. In that room, there was a window which was opening outside, and from that window, there was a view of outside. And what she could see from that window, actually, there was a chair in front of that window, and she just sank herself into that chair. And then when she had sat in that chair in that way, sinking way, because she wasn't in her own senses, so she just sank herself into that chair and then looked in front. So she got to see that window which was open to the outside world. So she began to see outside that window, out of that window. From that window, she began to see. From her chair itself, she was looking out of that window. And what she got to see was the sky that was covered with clouds in different, in separate patches. So she looked outside. तो now this is something very very important कि क्या क्या उन्होंने देखा. जब बाहर उन्होंने देखा तो उनको क्या क्या चीज़ें नज़र आई. बाहर उनको नज़र आया एक पेड़, और that tree had got the leaves which were trembling and with a very with a novelty and with a new energy. It was due to the beginning of the spring season, due to the springtime. So there was a kind of a newness, or you can say new energy, new enthusiasm in those leaves.
and then she could hear the birds twittering. Then she could also hear some distant singing of a song. So these were the things that she could feel, hear, see, matlab different senses she could have. But when she looked above from that window, then she could see that there were some clouds in different patches, in separate patches. She could see the clouds all over the sky, whatever was in her view. तो उनको ये दिख रहा है कि आसमान में बादल जो है वो डिफरेंट पैचेस में, सॉरी सेपरेट पैचेस में हैं. अब वहाँ पर जाहिर सी बात है, अगर बाहर कोई इंसान देखेगा तो वो ये कहेगा कि आसमान में बादल हैं, लेकिन उनका कहना है कि ये सेपरेट पैचेस जो क्लाउड्स के हैं, इनके बीच से आसमान दिख रहा है. जनरल जो हम कहेंगे वो ये कहेंगे जनरली कि आसमान में बादल के टुकड़े हैं. देयर आर पैचेस ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई. बट see her perspective, this is something really very important. Her perspective in regard to that was that she could see the sky through those patches of the clouds. अब इसका मतलब क्या है? ये सिम्बोलाइजेशन है लिटरेचर के अंदर. सिम्बोलाइजेशन क्या होता है, या ये सिम्बोलाइजेशन क्या है? जब एक चीज़ किसी अदर डीप मीनिंग को सिम्बोलाइज करती है, जैसे यहाँ पर और वैसे भी इन जनरल स्काई सिम्बोलाइज करता है लिटरेचर के अंदर फ्रीडम को, और क्लाउड्स सिम्बोलाइज करते हैं सैडनेस को या बैड डेज ऑफ लाइफ को, हार्डशिप को, एडवर्सिटी को. दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज़ टेक इट डाउन समवेयर. So clouds are symbolizing hardships or adversities or bad days of life, rainy season, or you can say rainy season के days भी जो rainy days कहा जाता है उनको bad days माना जाता है. bad days of life represent करते हैं rainy days. तो clouds जो हैं, और जैसे कि आपने एक कहावत भी सुनी होगी, इंग्लिश में एक proverb है, every cloud has a silver lining. that means every bad day has got a beautiful morning and another bright day. तो हर बुरे दिन के बाद एक अच्छा दिन आता है, हर अंधेरे के बाद सवेरा आता है, ये इसका मीनिंग है. तो क्लाउड्स रिप्रेजेंट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं सैडनेस को, बैड डेज को, या एडवर्सिटीज़ को, या हार्डशिप्स को, और स्काई सिंबलाइज करता है फ्रीडम को. अब अगर वो ये कह रही हैं, पहले तो वो बहुत देर तक एकदम लॉस थी अपनी थॉट में, लेकिन जब वो बाहर देखते देखते उनके अंदर ये थॉट डेवलप होने लगी कि ये जो काले काले बादल हैं जो कि सिंबलाइज कर रहे हैं सैडनेस को, प्रॉब्लम्स को, ट्रबल्स को, इनके थ्रू, इनके बीच बीच से आसमान भी तो नज़र आ रहा है. मतलब ये है कि इन दुखों के बादलों के बीच से कोई फ्रीडम भी तो नज़र आ रही है. इसका मतलब ये है कि ये जो इनको इतना बड़ा दुख मिला है अपने हस्बैंड की डेथ का, इस डेथ को अगर साइड कर दिया जाए तो इस डेथ के दुख के थ्रू या इसके बीच बीच से एक खुला आसमान भी तो नज़र आ रहा है. That as a result of this death of her husband, she will be able to enjoy a life of freedom, in the sense that there will not be someone in her life to dominate her all the time and to tell her all the time what is to be done by her, and that she will become her own master, and that she will be able to take the decisions of her life on her own, and that will be a great thing in her life. Because since she is married, since she has been married, she has not lived a single day with her own choice. She has to, most of the time follow the instructions reluctantly. So she started thinking in this way, and at length, or after a long time, after having thought so much about all this, she decided to go downstairs. But before we come to that part of her that she decides to go downstairs, there's something else that happens. She gets into the state of dilemma is कश्मकश, or a state of confusion. अब किस बात की कश्मकश या क्या कन्फ्यूजन है? द थिंग इज़ कि उसको ये लग रहा है, हम इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हमें सिखाया जाता है, मतलब इन जनरल, ऑल्दो अभी तो विमेन आर एम्पावर्ड, लेकिन पहले की हमारी जो एक पैटर्न था सोसाइटी का वो ये था
कि वेमेन को ये सिखाया जाता था दैट योर लाइफ बिगिंस एज वेल एज एंड्स ऑन योर हस्बैंड, मतलब सब कुछ हस्बैंड के से जुड़ा हुआ है, ज़िंदगी शुरू भी और एंड भी उसी के साथ हो जाती है। तो अब जब इस तरह का पैटर्न है सोसाइटी का और उसने इन चीज़ों को सीखा है, तो उसको लग रहा है कि उसे तो दुखी होना चाहिए अपने हस्बैंड की डेथ पे। वो खुश कैसे हो सकती है? हाउ कैन शी बी हैप्पी अबाउट इट दैट हर हस्बैंड हैज़ डाइड? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वो खुश होने लगी थी ये सोच कर कि जब उसको ये एहसास हुआ कि इन बादलों के बीच से एक आसमान भी दिख रहा है, इन दुखों के बादलों के बीच से एक आज़ादी भी नज़र आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो खुश होने लग गई। और जब वो खुश हुई तो उसे लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट मॉरल, दिस इज़ इमोरल टू बी हैप्पी व्हेन योर हस्बैंड हैज़ एक्सपायर्ड. As a wife, you should have been loyal to him, and your loyalty will be proved when you are sad on his death. So she was thinking in this way, whether she was doing something devilish or monstrous that she was getting happy about it. So she was just trying to analyze her thoughts, and she was in this state of dilemma, कि ऐसा क्यों उसको फील हो रहा है, क्यों वो खुश हो रही है हस्बैंड की डेथ पर, उसे समझ में नहीं आ रहा है। और उसे इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, वो इसलिए इतना कन्फ्यूजन में है क्योंकि उसका जो हस्बैंड था, एक जो जनरल पर्सपेक्टिव होता है लोगों का सोसाइटी के अंदर मैरिज को लेकर के, वो इस स्टोरी में मेंशन है। व्हेन वी विल गो थ्रू दिस स्टोरी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट प्रॉपरली, कि it happens in this relationship of marriage that it is believed that this right is given to both the partners, that they can decide for each other and that they have got the rights upon each other to this extent that they can impose their private choice or personal will upon their counterparts or upon their spouses or husbands and wives. Spouse means husband or wife. तो वो एक उनको ऐसा लगता है कि मैरिज की रिलेशनशिप में उनको ये हक मिल गया कि वो अपनी पर्सनल चॉइस को, अपने विल को, अपनी प्राइवेट चॉइस को एक दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज कर सकते हैं। जबकि क्योंकि हमारा पैटर्न जो सोसाइटी का है, या जो एक पैटर्न अब तक चल रहा था ऑलमोस्ट इन द इंटायर वर्ल्ड, वो ये था कि women are supposed to be under the control and dominion and leadership of men. तो men are supposed to be the masters of the women. तो इस तरह के पैटर्न में फिर क्या हो जाता है कि मैरिटल रिलेशनशिप के अंदर a husband gets all the rights upon the wife, and then the husband has got this right to impose his personal choice and private will, you can say, upon his wife, कि मतलब जो वो चाहे पर्सनली, जो उसको पसंद हो, जो उसको ठीक लगे, वो ही उसकी वाइफ को करना है, और उसका वो हक होता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरा राइट है कि वो अपनी वाइफ पर उस चीज़ को लागू कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, और वाइफ को उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह का ये एक पैटर्न है। अब इसके अंदर होता क्या है कि दो तरह से चीज़ों को फॉलो किया जाता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्ती, फोर्सफुली, मार पीट कर और अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को दिखाकर इस तरह से बातों को मनवाते हैं इफ़ वाइफ इज़ रेजिस्टिंग और समथिंग। और दूसरा केस ये होता है कि अ हस्बैंड इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, लेकिन हर बार वो प्यार मोहब्बत से अपनी बात को मनवाता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ शामिल है कि हर बार दैट वाइफ इज सैक्रिफाइसिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग, and she has to do something which she herself doesn't want to do. She has to follow the instructions of her husband, whether unwillingly or reluctantly, but she has to do so. So she tends to lose her identity or individuality in the process of simply following the instructions of her husband. She becomes a follower and her husband becomes a commander. And in this process, when she tends to lose her identity or individuality, then there, begins a kind of a crisis in her, which
makes her think, that she is in a kind of a bondage or a foundation or a confinement, and that she is not free enough to live her life the way she wants, or like a free bird in the sky. तो द सेम थिंग हैपन्स हियर, क्योंकि यहाँ पर भी जो उनका हस्बैंड था, ब्रेंटली मिलार्ड जो है, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चीज़ इस तरह से अब्यूज़िव तरीके से या फिर फिज़िकल स्ट्रेंथ दिखाकर इस तरह से अपनी वाइफ से नहीं मनवाई है, लेकिन अपनी बातों को हमेशा उन पर इम्पोज किया है। हाँ, इस तरह से कि आई लव यू अ लॉट एंड आई केयर फॉर यू अ लॉट, तो इस वजह से आई एम आस्किंग यू टू डू दिस। तो अब यहाँ पर ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपको मार्क करना चाहिए। दिस इज़ ऑन पेज नंबर 56, और यहाँ पर आप इसको मार्क करो। जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें, व्हेन वी डू इट इन डिटेल्स आई विल एक्सप्लेन यू एवरी सिंगल थिंग। आप देखो यहाँ पर किस तरह से मिसेस मिलार्ड को ना इस बात का एहसास होता है इस पॉइंट पे। देखो अभी तक तो उनको ये लगा कि हाँ, पहले तो वो जब ऊपर जाती है बहुत अफसोस में है, दुखी है, परेशान है, सैड है अपने हस्बैंड की डेथ पे, बट खिड़की के बाहर देखती है तो विंडो के बाहर जब खुला आसमान दिखता है और उसके बीच बीच में उनको क्लाउड्स दिखते हैं, तो उनको लगता है, तो वो इस तरह नहीं देखती जैसे आसमान में बादल है, वो ऐसे देखती है जैसे बादलों के बीच से आसमान नज़र आ रहा है। और फिर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, उनको अपने दुख में भी एक खुशी या एक फ्रीडम नज़र आने लगती है, और फिर वो खुश होने लगती हैं। और जब खुश होने लगती हैं तो उनको ये लगता है कि उनका खुश होना सही नहीं है, वो गलत है, क्योंकि सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि बीइंग अ वाइफ शी इज़ हैप्पी अबाउट हर हस्बैंड्स डेथ। और तब फिर जब वो अपनी उस थॉट को एनालाइज करती हैं, तब उन्हें यहाँ पर ये एहसास होता है जो लिखा हुआ है, अ काइंड इंटेंशन और अ क्रूअल इंटेंशन मेड द एक्ट सीम नो लेस अ क्राइम एज शी लुक्ड अपॉन इट इन दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन। इसका मतलब ये है कि उस वक्त ना वो उनको एक, जब वो एनालाइज कर रही थी अपनी थॉट को और बहुत कश्मकश में थी, बहुत कन्फ्यूजन में थी कि ये क्यों उनको फील हो रहा है, ये गलत है, वो क्यों खुश हो रही है इस बात से अपने हस्बैंड की डेथ पे, तब उन्हें लगा कि उनके हस्बैंड ने उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उनको मारा पीटा नहीं, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन फिर भी वो खुश हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हस्बैंड ने भी उन पर अपनी विल्स को, अपनी बातों को, अपनी पर्सनल चॉइस को हमेशा इम्पोज किया। तो अब बात यह है कि चाहे अपनी पर्सनल चॉइस को प्यार मोहब्बत से इम्पोज किया जाए या फिर ज़बरदस्ती इम्पोज किया जाए, लेकिन एक जो सामने वाला इंसान है जिसकी अपनी भी एक इंडिविजुअलिटी, एक आइडेंटिटी है, उसे उस चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, उसे अपनी आइडेंटिटी को लूज़ करना पड़ रहा है उस प्रोसेस में। और ये बात उसे एज एन इंडिविजुअल कहीं ना कहीं हर्ट करती है, कहीं ना कहीं वो अपने फ्रीडम को लूज़ करता जाता है, एक कन्फाइनमेंट में, एक लिमिटेशन, एक रिस्ट्रिक्शन में रहने का एहसास उसको होने लगता है। तो चाहे कोई ज़बरदस्ती अपनी पर्सनल चॉइस को इम्पोज करे या फिर प्यार मोहब्बत से करे, ये कहकर कि आई लव यू अ लॉट and that's why I want you to do this, I care for you a lot and I know better for you, I know कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है, तुम्हें यही करना चाहिए। तो वो चीज़ एक बार अच्छी लगती है, दो बार अच्छी लगती है, लेकिन जब वो चीज़ कंटिन्यूएशन में चलने लगती है, हर बार उसका हस्बैंड ये बताता है कि आई लव यू अ लॉट एंड आई केयर फॉर यू अ लॉट, दैट्स वाई आई नो व्हाट इज़ बेटर फॉर यू एंड यू मस्ट डू दिस व्हाट आई थिंक बेटर फॉर यू, तो फिर वो चीज़ एक बाउंडेशन, एक लिमिटेशन, एक रेस्ट्रिक्शन बन जाता है। और फिर इस तरह से वो रिलेशनशिप धीरे धीरे एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप से चेंज हो जाता है, एक मियरली कन्फाइनमेंट, रेस्ट्रिक्शन, बाउंडेशन में ऐसा लगता है जैसे कि एक कैद में है वो इंसान, एक इम्प्रिजनमेंट में, प्रिजन में है। तो हियर वी गेट टू सी कि तब एहसास होता है मिसेस मिलार्ड को कि अच्छा बात ये है, if she is happy at present to think of her freedom, then this is not at all immoral, because she was not happy in her relationship of marriage, because she was also being imposed all the wills of her husband, like her husband was always imposing his personal choices upon her. Yeah, he was doing it in a kind way, in a beautiful way, in a loving way, but if it was happening always and in continuation, then it had actually become kind of intolerable. And
बिकॉज शी वॉज थिंकिंग इन दिस वे कि जब उसको ये लग रहा था कि वो खुश कैसे हो सकती है अपने हस्बैंड की डेथ पे और ये चीज़ गलत है, तो फिर उसने इस तरह से सोचा कि जब अभी उसके हस्बैंड की डेड बॉडी आएगी उसके सामने, तब उसका क्या रिएक्शन होगा, क्या तब भी उसे अच्छा लगेगा देख कर के अच्छा हुआ ये मरा पड़ा हुआ है। तो उसको एहसास हुआ कि नहीं, शी विल फील बैड अबाउट इट। जब वो उसकी तरफ देखेगी तो उसको बुरा लगेगा ये सोचकर कि ये वो चेहरा है उसके हस्बैंड का जिसने हमेशा बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा, एंड दीज आर द हैंड्स जिसने हमेशा उसको बहुत प्यार से टच किया। तो उसे इस बात के लिए बुरा लगेगा। She will cry again. She'll cry badly when she sees her husband, dead, who has always looked at her with a lot of love. तो उसको इस बात के लिए बुरा लग रहा है, तो उसको लग रहा है कि उसे रोना भी आएगा। लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म का सोचे तो उस रोने के बाद, उस दुख के बाद, उस मोमेंट्री सॉरो के बाद एक उसकी बहुत लंबे टाइम के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। She will have a beautiful life, she will have a free life, and she will be able to have her own identity, own individuality, own free will, and she'll be able to do things out of her own choice. So she was thinking in this way. And then उसने फिर सोचा इसके बारे में, as I told you, कि क्यों उसको अपने हस्बैंड के लिए, तो उसको ये लग रहा था ना कि she is not able to understand whether she used to love her husband or she did not love her husband, because कभी उसको लग रहा है कि उसको अपने हस्बैंड के जाने का बड़ा दुख हो रहा है, कभी उसको लग रहा है कि वो खुश हो रही है। तो जब उसने सोचा पास्ट के बारे में तो उसको फील हुआ कि कभी कभी तो उसे अपने हस्बैंड पे बहुत प्यार आता था, लेकिन कभी कभी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उसके साथ रहना। तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी वजह ये थी कि ही वॉज डूइंग एवरीथिंग with a lot of love and with a lot of care and with a lot of kindness, politely he used to impose his personal choices upon her. But because this was happening in continuation, that's why it had become quite torturing or tormenting for Mrs. Millard, and she was not able to actually tolerate it anymore. And that's why जब उसको हस्बैंड का पता चला डेथ का और वो ऊपर जाती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसकी बॉडी, उसकी आत्मा सब बहुत थक चुकी है, एंड शी जस्ट सिंक्स इनटू दैट चेयर। और जब वो इस फीलिंग को समझ जाती है कि क्यों वो खुश हो रही है अपने हस्बैंड की डेथ से, और उसे ये भी एहसास होता है कि जो भी हो रहा है उसका लॉन्ग टर्म में जाके उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसकी अपनी आइडेंटिटी जो लूज़ हो चुकी है वो वापस आ जाएगी। और अगर वो खुश है भी अपने हस्बैंड के जाने से तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो उसके हस्बैंड ने उसके साथ किया वो गलत था। क्योंकि उसे ये लगता है, उसे ये रियलाइजेशन हो जाता है कि चाहे अपनी पर्सनल चॉइस को कोई क्रूएलिटी के साथ, ज़बरदस्ती, बदतमीज़ी के साथ इम्पोज करे या प्यार मोहब्बत और पोलाइटनेस के साथ इम्पोज करे, लेकिन ये अपनी पर्सनल चॉइस को किसी और पर कंटिन्यूसली इम्पोज करना गलत है। और ये गलत है तो ये गलत है, फिर चाहे इसे काइंडनेस के साथ इम्पोज किया जाए या रूडनेस के साथ किया जाए। और क्योंकि she was suffering from that, that's why today she is feeling relaxed and happy about it, that she is going to get her freedom back. So she gets happy about it, and then she decides to go downstairs. And in the meantime, her sister Josephine is all the time at the door, standing and waiting for her sister to come outside, and trying her best to open the door as well, like calling out her name all the time कि प्लीज़ आ जाओ, बाहर आ जाओ, because her sister was under this impression कि जो मिसेस मलाड है वो बहुत परेशान है अंदर, और पता नहीं वो उनके साथ कुछ बुरा नहीं हो जाए, क्योंकि जोसेफाइन was under this impression कि उनके सिस्टर को हार्ट का भी प्रॉब्लम है, वो सेंसिटिव है उनका हार्ट, तो उनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो जब ये फाइनली डोर खोल के बाहर आती हैं मिसेस मलाड, तो जोसेफाइन के साथ फिर वो नीचे आती हैं, और जब वो लोग नीचे आते हैं तो मिस्टर रिचार्ड्स वॉज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर स्टैंडिंग, और तभी डोर नॉक होता है, और जब दरवाज़ा खोला जाता है तो एज अ शॉक मिस्टर मलाड और ब्रेंटली मलाड, यू कैन से, ही एंटर्स। तो एक्चुअली ये जो न्यूज़ थी इनके डेथ की, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, जो कि मिस्टर रिचार्ड्स को हो गया था, और ये गलत न्यूज़ लेके आ गए थे। तो ब्रेंटली मलाड इज़ स्टिल अलाइव,
और जब भी लोग उनको अलाइव देखते हैं तो उनको देखते ही साथ सबसे पहला जो एक नज़र जाती है मिस्टर रिचर्ड्स की, वो जाती है मिसेस मलाड की तरफ, ये देखने के लिए कि उनका क्या रिएक्शन होगा अपने हस्बैंड को अलाइव देख के। बट जब तक वो देखते हैं उनकी तरफ, तब तक होता ये है कि शी डाइज़ ऑफ हार्ट डिसीज़। और बहुत आयरॉनिकल सी बात है, इसको समझिएगा, शी डाइज़ ऑफ हार्ट डिसीज़, तो उनकी डेथ हो जाती है। मिसेस मिलार्ड जैसे ही देखती हैं मतलब अपने हस्बैंड को, तो हस्बैंड को देखकर उनकी डेथ हो जाती है। और फिर जब डॉक्टर्स उनकी रिपोर्ट बनाते हैं इस डेथ के बारे में, तो डॉक्टर्स का कहना है, देखो लास्ट लाइन स्टोरी की, व्हेन द डॉक्टर्स केम दे सेड शी हैड डाइड ऑफ हार्ट डिसीज़ ऑफ जॉय दैट किल्स। तो रिपोर्ट में ये डिक्लेयर किया जाता है कि मिसेस मिलार्ड की डेथ हो गई है एक्सट्रीम खुशी की वजह से। जबकि क्या ये सच है? वी एज रीडर्स नो कि उनकी डेथ खुशी की वजह से नहीं हुई है, क्योंकि जब वो नीचे उतरी थी तो वो खुश होकर उतरी थी कि अच्छा है कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। अब इस डेथ की वजह से उनको कम से कम अभी तो दुख होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक फ्रीडम मिल जाएगी और सारी ज़िंदगी जो कॉम्प्रोमाइज़ किए उन्होंने अब तक वो नहीं करने पड़ेंगे। तो वो खुश थी। इसका मतलब हस्बैंड को देखकर एक्सट्रीम लेवल का जॉय तो फील हुआ नहीं होगा, तो हस्बैंड को देख के शायद एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस फील हुई जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उससे उनकी डेथ हो गई। क्योंकि इट वाज ऑलरेडी एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर कि उनका हार्ट जो है बहुत सेंसिटिव है और वो एक्सट्रीम लेवल की गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ को टॉलरेट नहीं कर सकती। लेकिन देखो डॉक्टर्स की रिपोर्ट कह रही है कि उनकी डेथ जॉय की वजह से हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स भी उसी सोसाइटी का पार्ट हैं, उसी पेट्रियार्कल पैटर्न की सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर ये कोई सोच ही नहीं सकता कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को देखकर दुख से मर जाएगी। यहाँ पर लोगों की पर्सपेक्टिव यही होती है दैट द वाइफ मस्ट हैव डाइड आउट ऑफ जॉय व्हेन शी गॉट टू सी हर हस्बैंड अलाइव whom she was thinking as dead. तो this is something really ironical कि although the wife has died as a result of shock and sadness, वो दुख से, उसको जो शॉक लगा वो दुख का शॉक था और वो मर गई कि उसको लगा कि जो उसने सोचा था कि फ्रीडम उसको मिल जाएगी, नाउ शी इज़ नॉट गोइंग गेट दैट, शी इज़ नॉट गोइंग गेट दैट बिकॉज हर हस्बैंड इज़ बैक to serve as a commander and to command her and to instruct her and to impose his personal choices upon her. So she died as a result of that shocking sorrow, shocking sadness. But doctors declare that she has died of joy. Why? Because doctors are also the members of the same patriarchal society wherein it is believed that a wife cannot die cannot die out of sadness if she gets to see her husband back alive. She must have died out of joy. So here it is believed that a wife is always sad about her husband's absence and she is always happy about her husband's presence. So in this society it is believed that for a woman her entire life begins as well as ends on her husband, and all her happiness is associated with her husband and all her sadness is like associated with her husband's death. So this is actually the perspective of the society which has been represented so beautifully with such an end of this story of an hour. I hope you have understood. Then we will meet in other video lecture with the line by line explanation of the same story. Thank you so much for watching.